Producer equilibrium. Today we will discuss this aspect. A situation of profit maximization where producer strikes its equilibrium at the level of output where profit is maximized. So warmly welcome you in this phase of learning, and we will going to have a break-even point where the manufacturing firm attain their equilibrium. Total revenue, total cost, marginal revenue, marginal cost, everything brings the profit and estimation of profit and a situation which is win-win for producer. Let's check it out. A break-even point which brings the no change or variation situation, and when it is attained by a firm or by a manufacturer or by any industry, it's or producer, it means to say that producer equilibrium is constructed. It is a situation of maximum profit and minimum loss, and there is no scope for expansion or contraction in the delivery of its output or in the contribution of the firm or producer. The image in front of you is the producer equilibrium. At point E, there is break-even point where MC is equal to MR and producer attain its equilibrium. Quantity 2 is delivered output and the situation is equilibrium for manufacturer. Again we have assembled, and there is the physical classes, and we are going to discuss today the economics class, and it is for producer equilibrium. This time we are discussing producer equilibrium. So we were going to discuss the perspective of the मैन्युफैक्चरर कि जो हमें आउटपुट डिलीवर करते हैं उनके बारे में सोचेंगे कि वो कैसे अटेन करते हैं अपना इक्विलिब्रियम. जो हमें आउटपुट डिलीवर करते हैं वो हमें अपना इक्विलिब्रियम कैसे डिलीवर करते हैं. हाउ डज द प्रोड्यूसर स्ट्राइक इक्विलिब्रियम. ऐसा कैसे होता है व्हेन दे अटेन इक्विलिब्रियम. Equilibrium means a state of rest for the producer. कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद प्रोडक्शन का स्टॉपेज हो और वो एक रेस्ट में अवेयर हो जाए. एंड हियर वी विल डिस्कस MR/MC approach. MR means marginal revenue. MR means marginal revenue means additional earning. And MC means marginal cost, yani extra expenditure. And here the producer equilibrium can be attained at the state of profit is maximum, because if profit will keep on coming, then the producer will not going to stop the production to enjoy the economics of scale. Because when you produce at large scale, your input cost reduces and your profit enhances. So the profit should be maximized first, and to strike an equilibrium, profit maximize होना चाहिए. To strike an equilibrium, first condition says कि MR should be equal to MC, and second, MC should be rising. MC should be rising. बढ़ती भी होनी चाहिए MC. MR इक्वल भी होना चाहिए और MC इंक्रीजिंग भी होनी चाहिए. And this marks you with this equilibrium. Graphical representation and table. Now I will tell you how this table get drafted. Look, we are increasing quantity one by one till 12 units. And in perfect competition, there is price stability because of that. And when prices are stable, that means marginal revenue, extra revenue will be with the same amount of price. And look, it is 12. Everywhere it is 12. Because in perfect competition, MR is always constant. Then, marginal cost. Initially, it is maximum. First stage, it is maximum. Then it keep on decreasing. So, and at one point, एक point के बाद
MC start rising. MC start rising. ऐसा इसलिए होता है बेटा कि समटाइम मशीनरी गॉट ऑब्सोल्यूट या मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है, जो प्रोडक्शन राइजेस करने की वजह से उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, या आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कुछ हद तक मार्जिनल प्रोडक्शन में इफेक्ट करती है, देन योर एमसी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ फर्स्ट से देन नेक्स्ट डेज इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. So 15, then 12, then 10, then 9, 8, 7. Then your MC start increasing from the below point. 8, 9, 10, 11, 12, 15. Look, firstly, I am reducing it by the same numbers. Then I start putting these numbers reverse. देखो पहले मैं 15 से 7 तक लेकर आऊंगी, फिर 7 से 15 तक लेकर जाऊंगी. चेक कर लीजिए. So this is the way to draft a table. कि आप क्वांटिटी 1 से इंक्रीज करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रखेंगे, फिर आपकी मार्जिनल कॉस्ट है जो उसे 15 से -3, फिर -2, फिर 3 टाइम -1, फिर 1 से 3 टाइम इंक्रीज, फिर आपका 2 से इंक्रीज और फिर 3 से इंक्रीज. दिस इज द सेम वे. चेक कर लीजिए बेटा. देन यू विल हैव द फॉलोइंग conditions into the graphs, and these graphs will show you one thing. Look, I have shown you one thing, MR is constant, and look, I have taken y-axis revenue and cost. तो मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू से. और मेरी कॉस्ट कहाँ से आएगी? मार्जिनल कॉस्ट से. तो एक्स एक्सेस पे तो मैं दूसरी साइड क्या लूंगी? आउटपुट. तो मेरा आउटपुट कहाँ से आएगा? दिस क्वांटिटी मार्क यू विद इन आउटपुट. और ये रेवेन्यू और यही आपकी कॉस्ट. और अब हम इसे शो करेंगे कहाँ पर? ग्राफ पर. लेट्स चेक इट आउट हाउ वी विल गोइंग टू डू सो. द फर्स्ट थिंग आई सेड MR इज कॉन्स्टेंट. So when number is constant, then you have straight line, and that marks you with price is equal to AR is equal to MR. Identity of perfect competition. आइडेंटिटी है बेटा ये परफेक्ट कंपटीशन की, कि एवरी एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोवाइड यू द सेम प्राइस एंड इक्वल एवरेज रेवेन्यू. क्योंकि बेटा उसमें कंपटीशन है, एज यू ऑल नो दैट उसमें परफेक्ट कंपटीशन है. बायर्स एंड सेलर्स का इन्फ्लुएंस मार्केट में, मार्केट फेयर प्ले से डिसाइड होता है. Then you have this graph, and let's look into the graph. The first thing, revenue is marginal revenue, so it is constant line. Look, and you have learned this in your industry is price maker and firm is price taker, if you remember it. Then we have the another aspect to be discussed, that is cost. Cost is the most crucial one because you will be pretty new to it. Look, marginal cost. Firstly, maximum, that means 15 point, maximum point. Then 12, that falls. It falls suddenly because it is falling by 3 na, so all of a sudden it falls. Then it reduces to 10, that means it comes down. Then again 9, then it's all fall. Then at 7 we check till 7, so it is falling, and then it moved to 8, 9, 10, 11, 12, 15. Look, it gets increased. It is rising. तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी, जो मार्जिनल कॉस्ट है, पहले फॉल कर रही है, फिर राइज कर रही है. और मुझे ऐसा कैसे मालूम चला? हाउ आई गेट टू नो? चेक. 15, 12, 10, 9, 8, 7. पहले क्या कर रही है? फॉल. देन 8, 9, 10, 11, 12, 15. दिस शोज योर फॉल. And the next thing it shows
your rise. That marks you with the same. Here is fall. Look, we are coming down. And the next moment we are rising. We are moving up. The first condition says कि producer equilibrium strike तब होगा जब MR MC के इक्वल होगी. Let's check कि MR MC के इक्वल हो जाए. So MR MC के इक्वल हो जाए. First condition is तो at number 2. Check. And if we check with the zoom look, so the second condition is at second last phase, where I have written MR is equal to MC. अब दो टाइम एक कंडीशन बन रही है कि MR is equal to MC. So where will the producer strike its equilibrium? अब सेकेंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. We will going to check it out that MC should be rising. MR should be equal to MC and MC should be rising. MC बढ़ती भी होनी चाहिए. Now see MC should be rising. तो now we should check कि पहली कंडीशन में तो MC फॉल कर रही है. अभी मैंने लिखा था we are moving downward. We are enjoying economics of scale कि हमारे को cost of production low आ रही है. फिर MC should be rising. हमें cost of production ज्यादा आनी चाहिए to strike equilibrium. So ये वाला कंडीशन बनेगी. Check क्योंकि MC is rising and it is equal to MR. Here MC is equal to MR and MC हो रही है rise. तो हमारी कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाला पॉइंट, यानी यूनिट नंबर 11. तो हमारी दो कंडीशन है जहां पर ग्राफ में भी हमारी MC और MR इंटरसेक्ट करें. Q1 and this is Q2 and this marks you with two phases L1 and L2 and your producer equilibrium will be at Q2. Why? Because beta this shaded area shows that MC MR से लेस है. MC लेस है MR से. देखिए बेटा 12 और 9 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 रुपीज है और 12 रुपीज आपकी अर्निंग है, तो 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा. तो प्रोड्यूसर विल गोइंग टू हैव द एंजॉयमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड दिस विल मार्क यू विद द टर्म प्रॉफिट. सो MC यहां पर लेस है MR से. That's why. And this is called second break even point. कि MR is equal to MC. This is mark you as producer equilibrium. Q2 will be your producer equilibrium. Because look, the condition producer equilibrium, MR equal to MC and MC should be rising, then profit is maximum. अब इस पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट नहीं आएगा. चेक करिए कैसे आएगा. 11th point, 12 rupees marginal revenue, 12 rupees marginal cost when it get equal. Then next time 12 rupees marginal revenue and 15 rupees marginal cost. That means you mark the loss of 3 rupees. That's why the profit is maximized as 11th rank. And the profit is maximized at 11th rank because it is break even point where MR is equal to MC and MC is rising. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है एंड दैट मार्क्स यू विद ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस टाइम प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट गोइंग टू गेट प्रॉफिट. यू विल नॉट एंजॉय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन योर लॉस. So the producers strike the equilibrium when MC is rising and it is equal to MR. And both the conditions should be there. So hereby we are concluding it for today. And I warmly welcome you next phase of session. So have a look of whole board presentation. Hereby, after having the presentation of the producer equilibrium curve and its graphical representation construction, let's conclude it for today by saying thank you for visiting with a promise to see you again soon.